नमस्कार। सोलर के जो एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स होते हैं दे टेक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंपनीज मार्केटिंग बजट। और चाहे आप वहाँ पे विजिट कर रहे हों या फुल फ्लेज एग्जीबिशन लगा रहे हों, इन बोथ केसेस इट कंज्यूम्स टाइम, एफर्ट, मनी एंड अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ ऑफ एनीबडी विजिटिंग और डूइंग। बट कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर मेरे जब भी सेल्स वालों से काफ़ी सेल्स वालों से बात करता हूं तो वो कहते हैं यार आज इस बार का ना एग्जीबिशन ठीक नहीं रहा, वो हमारे हॉल में ना फुटफॉल नहीं था। पहले दिन और आखिरी दिन तो फुटफॉल ही नहीं था यार, दूसरे दिन भी दोपहर को ही सिर्फ लोग आए थे। और यार हमारा तो लोकेशन बूथ का ही ऐसा था कि कोई आया ही नहीं वहाँ पे, गलत हो गया, अगले साल हम दूसरा लेंगे। नाउ बीइंग ऑनेस्ट, कुछ एग्जीबिशंस बहुत अच्छे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर एग्जीबिशन जा रहा है और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सोलर का कोई भी एग्जीबिशन है उसमें फुटफॉल ढंग का रहता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स और बड़े ईपीसीज, डेवलपर्स, आईपीपीज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजरली एग्जीबिशन जो होता है सोलर का, उसमें आपको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड ओईएम्स एंड डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ही मिलेंगे, लेकिन it brings in the crowd of EPCs and installers, small and big, of that region to that exhibition. अब उनको अपने बूथ पे कैसे खींचना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और इफ यू आर जस्ट ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट you meet these people. It is not the responsibility of your company or that of the exhibition organizer to make sure that there is footfall on your booth or you meet people. It's your own responsibility. So I'm going to give you 8 reasons or 8 tips that can help you make sure that exhibition for you is worth it. अब solar exhibitions होते हैं, that any solar exhibition is actually worth it for you. Number 1, okay, have a clear image. Most of the time, these are the 8 reasons why companies fail at exhibitions. So, number 1, no clear message. Designate what you want to promote, sell, brand or communicate in an exhibition and to whom. ये बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो exactly आप क्या बेचने जा रहे हैं और किसको बेचने जा रहे हैं। Of course, इफ यू आर अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर, आप मॉड्यूल बेचने जा रहे हैं, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर, आप इन्वर्टर मैन्युफैक्चर बेचने जा रहे हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट है, बट फोकस ऑन वन प्रोडक्ट। ओके, मेरा जो 555 वॉट का पैनल है या 225 वॉट का किलोवाट का इन्वर्टर है, मैं उस पे फोकस करूंगा। ऑफ कोर्स यू आर सेलिंग अ लॉट, बट देन व्हेन यू फोकस ऑन दैट द मैसेज इज क्लियर। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर दैट यू नो आप किसके लिए वहां जा रहे हैं। नंबर 2, the reason for which the exhibitions are not very good for people, assuming that they know who you are, that the people who come to exhibition, they know who you are, where you come from, what your company is and all that stuff. Honestly speaking, nobody cares. Even if you are the biggest company in solar, as long as they are on your booth, they are very hunky dory, are wah kya baat hai, badhiya ji, and all that stuff. As soon as they leave your booth, whoever you are, the customers are ruthless. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बूथ से उतरते ही आपको भूल जाएंगे। So make sure that you don't assume that your customer who's coming there is all pally with you and knows you और उसको सब कुछ पता है आपके बारे में। Practice your sales pitch. Make sure that you are aware कि आप क्या बेच रहे हो और अपनी sales pitch क्या है, उसको practice करें। Alright. Number 3, no plans or goals. If you are going to an exhibition, what is your goal? What is your plan? Of course, भैया लोग बोलेंगे my goal is to meet people over there, but that is not. For that you can actually at a much lower cost create a networking event even online and meet people and get data. अगर आपको यही करना है तो इतना पैसा, इतना एफर्ट करने की क्या जरूरत है। Make sure that your goal and your purpose is very clear. What is your purpose? What do you want to get from that exhibition? Do you want to get lead? Do you want to get contacts? Do you want to get requests or offers? What is it? Be very, very clear. If you make this clear, everything will be easier when the show is going on, because आपके दिमाग में complete clarity है कि मुझे इससे क्या निकालना है, मुझे क्या लेके जाना है। मुझे 200 लीड चाहिए, मेरे को 50 लीड चाहिए, मेरे को 100 नए विजिटिंग कार्ड्स ऑफ EPCs कलेक्ट करने हैं। What is it that you want to do? Make sure that it is clear to you. Now point number 4, no target audience definition.
ये बहुत डिफिकल्ट होता है और दिल पे पत्थर रख के करना पड़ता है, बट इफ यू आर इफ यू आर एग्जिबिटिंग एंड यू हैव 3-4 पीपल, मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज देयर टारगेट ऑडियंस। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, कोई छोटे प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, कोई पर्टिकुलर पैनल को देख रहा है, कोई पर्टिकुलर इन्वर्टर के बारे में देख रहा है। जितना आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, हाउ मच to the max you can segregate it, the better it is, because that way you are clear ki who's handling what. Okay, number 5, no pre-event reach out. Most of the people think भैया इवेंट हो रहा है, इवेंट वाला सब करेगा, मेरी कंपनी ने किया है, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, सब बढ़िया है। नो, यू हैव टू गो अहेड एंड डू योर इवेंट रीच आउट। इवेंट रीच आउट इज नॉट पुटिंग अ सोशल मीडिया पोस्ट। इवेंट रीच आउट इज मेकिंग श्योर दैट यू सेट योर अपॉइंटमेंट्स। जो ये इवेंट्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं, दे रन वेरी फास्ट। इसमें पता ही नहीं चलता कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, और 2 दिन के बाद हम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, अच्छा कौन से कार्ड कलेक्ट किए, क्या किया। नो, मेक श्योर दैट ड्यूरिंग दिस टाइम यू आर मोस्ट प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू क्लोज अ सेल। अगर एक आध हो जाती है, 2-3 हो जाती हैं, दैट इज रियली गुड, ऑसम, बट at this time you are supposed to connect with people, so make sure that you are setting up appointments with people for meeting. भाई ये लोग तो आएंगे ही, वहां मुलाकात तो हो ही जाएगी, but what if they are busy? How do you know that they are going to meet you and spend the time? So if you fix that time with the people who are coming in, it is really good and it really helps. Number 6, okay, saying no to social media. A lot of people say कि भैया सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, पर्सनल ब्रांड नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरा लिंक्डइन इस टाइम या फेसबुक या इंस्टाग्राम देखेंगे, you will see a lot of posts going on for a particular expo that is going to happen in the next couple of days. So if you look at that, I am promoting myself. This is my personal brand and I am getting reach out. Because of that, I am not exhibiting, but मेरी कम से कम 8 appointments already booked हैं 2 दिन के लिए. And by tomorrow, I will have another 6 or 7 booked. So my 2 days would be really worth it. I am going to meet 15 people. Even if I'm not able to meet 15 people, 7 appointments are good. That is about 6-7 hours of information that I'm going to pass on to a valid customer of mine. So मेरी क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक है इस पर. So use social media, LinkedIn, Facebook, Instagram. Don't think कि LinkedIn प्रोफेशनल है, Facebook नहीं है. Every social media platform, हर एक जगह पे जाना है. Okay, of course. अब एग्जीबिशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या? So these are the 2 points that I would like to say, and these are the two most important points जो हम लोग बुरी तरह से मिस आउट कर जाते हैं. Number 1, no follow up. लोगों को लगता है follow up starts the next week of the exhibition. No, the follow up starts as soon as the person steps on to your booth or you meet them. ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है, भैया अभी तो मुलाकात शुरू हो रही है और उस पे ही हम फॉलो अप करना कर दें. Yes, you have to make sure that आपकी follow up messaging आपके पास already है, and जो ही आप किसी से मिलते हैं, as soon as you meet up with somebody, you have to make sure that they remember you. Exhibition people will meet a lot of people, so you might come on to the very bottom of that list. So 2 things that you can do here. Number 1, have your follow up messaging ready. Okay, it's a standard message you will send to everybody as soon as you meet them. Exchange cards or their number, send it on their email and WhatsApp as soon as they do. If you find a customer that is slightly more important or more interested in your product, do this. Take a selfie with that customer. Okay, sir, selfie लेते हैं ना एक उसके लिए. And then with that pretext, send that selfie with your contact details and a follow-up message to that customer right there in front of them. That way they will remember it. Put a hashtag of your company name so that when you have to search for it 2 days later, you could just put that hashtag and आपको वो सारे लोग मिल जाएंगे जो उस एग्जीबिशन में उस दिन आए थे. So you can put hashtag exhibition में exhibition name day 1. Okay, that way for day 1 you will know the customer. Exhibition name, hashtag exhibition name day 2. Just put that as a comment or a note over there. That way you can track your customers, and everybody likes to get a selfie click. So उसमें problem नहीं है. Last but not the least, ये 8वां point है, and this is by far the most important point or most important thing that you can do. And this is especially for people who are exhibiting. If you are exhibiting at a Solar Expo, make sure that whether the next day is Saturday, Sunday, or a holiday, or there's a long weekend, it doesn't matter. You have to sit down with your team.
preferably that evening itself. I know it is tiring, it is really a lot of effort, but then figure out what you did good and what you did bad in that expo, what you did wrong and what you did right in that expo, what could be improved and what are the things that you are going to extract, what are the responsibilities of people for the next 5-6 days, because that is the most important period. Any expo usually ends up on a Friday or a Saturday. So everybody takes an off on Sunday. For Expo, next Sunday should not be an off. It should be something that you actually cherish, and make sure that your follow-up messaging is going on that day. You don't have to call people. Send them emails, send them WhatsApp. If you've already set up emails, that is really good. Go ahead and do that, because if you do not do that, your next expo is going to be exactly the same, and then at the end of it हम चीखते चिल्लाते रहेंगे, यार ट्रैफिक नहीं था, अच्छा नहीं हुआ, वेदर खराब हो गया, हमारे बूथ पे तो लोग नहीं आया, मजा नहीं आया. So avoid saying all this, and remember, it is your responsibility to make sure that your expo goes well, whether you are traveling to that, visiting, or you are exhibiting. In both cases, okay, it is your responsibility to make it good, and I'm pretty sure that you can. So just one more point, there's an expo happening in a few days in Hyderabad. High-Tech's RenewX is the name of the expo. I'm going to be there. So if you are from Hyderabad, Telangana or South India, and or from any part of India actually, and visiting RenewX, if you see me around, tap me on the shoulder and let's chat about how we can help you grow your solar business. If you're a solar EPC, distributor, panel manufacturer, or inverter manufacturer, me and my company can help you grow your solar business, increase your conversion rates. So let's talk about how we can grow your solar business. So see you at the expo. Take care and bye.